Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. I hope that you're doing well. I'm your instructor of the English subject. My name is Zia Hamid. I hope that all of you have settled down, you are attentive and ready for this very first lecture of our English 9, chapter number 1. Now, let's start our students' learning outcome of the competency of grammar. Students, we always start our lectures and the upcoming lectures, we always begin with grammar competency. हम सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि English according to the book and also generally it is divided into different competencies. The competency of grammar and vocabulary, then reading comprehension, critical thinking, also oral communication, and then the writing competency. So let's begin the lesson with the competency of grammar. So I hope students that you're ready. Now here you can see this is our students learning outcome. First let's read it. कि SLO क्या है और हमने क्या करना है according to the SLO. It says demonstrate knowledge and application of parts of speech. Let's highlight parts of speech in oral and written communication in varying degrees of complexity. So this is the SLO that we will cover. हमने क्या करना है कि demonstrate करना है, दिखाना है अपनी knowledge को कि हमें कितनी understanding है और हमें कितना knowledge है about parts of speech. So please students raise your hands. How many of you are aware of parts of speech? Very good. MashaAllah, all of you are very well aware of this topic. One of the very basic concept of English. Now parts of speech को हम ना सिर्फ अपनी knowledge को दिखाएंगे बल्कि हम apply करेंगे parts of speech in our written and oral communication. For example, अगर हम लिख रहे हैं कुछ भी, अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं, फिर राइटिंग एनीथिंग, और जब हम बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं किसी को, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और वेरिंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस स्टूडेंट्स, बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं जो हमने समझना है, बहुत ज़रूरी है. तो ये हमारा SLO है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउन एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड ऑल्सो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. ये हमारा आज का लेसन का ओवरव्यू है. तो लेट्स सी. So who is going to tell me that what a sentence is made up of? एक जुमला अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस जो है उसको बनाने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. यस, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल को अनम्यूट कीजिए. यस, जब हम एक सेंटेंस देखते हैं बच्चों, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं. उसमें नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है. व्हेन वी आर लुकिंग एट अ सेंटेंस वी फाइंड वर्ब्स. तो क्या है ये सब? दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच. ऑल ऑफ दीज पार्ट्स, दीज थिंग्स, दे मेक अप स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके जरिए हम जुमले को बनाते हैं, समझते हैं, लिखते भी हैं और उससे यूज करते हैं बातचीत करने के लिए. नाउ, तो लैंग्वेज में, किसी भी जबान में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलके एक लैंग्वेज को बनाती हैं, और उसी में एक जो हम आज पढ़ रहे हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच.
We know the parts of speech. I hope that you can actually name all of them. So, अब यहाँ पे देखें, what do we mean by varying degrees of complexity? Here we have a simple sentence. The cat sleeps. Simple hai, very easy to understand, right? Now, if we just look at this, the black cat sleeps peacefully on the soft cushioned chair. The length of the sentence वो भी ज़्यादा है और इसमें कॉमास का इस्तेमाल हुआ है और इसमें adjectives हैं, adverbs हैं. So this makes it a little bit complicated and complex to understand. Now, let's see. We have nouns in parts of speech. There are 8 parts of speech that we need to memorize. And I hope that all of you know about these different parts of speech. Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Clear है बच्चों? All right. So, इस लेक्चर में हम noun को जिक्र करेंगे. What is a noun? And what are the different complexities? इसमें क्या degrees हैं और किस किस्म के nouns हैं और singular कैसे है और उसको अगर जमा का सीगा यूज करना पड़े, अगर हमें जमा इस्तेमाल करना पड़े, वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो नाउन्स को हम डिस्कस करेंगे. एंड वी नो इफ वी डिफाइन नाउन, नाउन सिंपली मीन्स नेम. लैटिन वर्ड है, उससे लफ्ज बना नाउन, जिसको हम नाम कहते हैं. स्टूडेंट्स, हर चीज का एक नाम है. आप अपने क्लासरूम में देखिए, you have your table, your chair, fan, LED, your microphone. सबका एक नाम है. हर चीज को हमने एक नाम दिया है ताकि हम उसे पुकार सकें, हम उसके साथ लिंक कर सकें. ऐसे ही है. Now, a noun is a word used as the name of a person, place or thing. कोई भी शख्स, जगह या चीज. और चीज में क्या है? All the objects that we can see, hear, taste, touch or smell. हर वो चीज जिसको हम अपने 5 senses के साथ perceive कर सकते हैं, उन सब का एक नाम है, and that is noun. Now, you can see some pictures on the screen. Now students, noun, the very first part of speech. There are different types of nouns. Yes, we have common nouns, proper nouns, concrete nouns, abstract nouns, singular nouns, plural nouns, collective, compound, countable and uncountable. So total we have 10 types of nouns over here. So what is the difference between all these nouns? Let's see. Now students, I want you to give me some examples. I will call upon your school's name. You will unmute yourself, or we will unmute yourself from here, and then you have to answer the question. All right? Okay, clear. So, the very first thing, सबसे पहले हमारे पास क्या है? Common noun. Common means आम. बहुत ज़्यादा आम चीज़ों के जो नाम हैं, they are common nouns. For example, we have a sentence, the girl rode her bicycle to school. Now, yes, please unmute Al Said Education System. Please unmute yourself and answer this question. हमारे पास यहाँ पे common noun क्या है इस जुमले में? Yes, school, girl, bicycle, ये सारे क्या हैं? They are the common nouns because there are so many schools, there are
so many girls, bicycles बहुत कॉमन है, so they are common nouns. अब आपने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है आपने, whenever you will get free from the class, all the common nouns, 20 nouns that are common, you need to think about it and make a list. आगे चलते हैं हम, हमारे पास now we have proper nouns. ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. These are the names of specific things, specific places or things जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. Now they are proper, which means they are special and specific, unlike the common nouns that are very common. For example, Said received an email from his aunt Ayman, who lives in Bahrain. अब let's see, Said, क्या ये नाम है? बिल्कुल. And this is the name of a specific person, एक खास इंसान का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So this is a proper noun. Bahrain is a place. This is a common noun. Ayman is this is a proper noun. Ayman is a proper noun. But aunt क्या है? Aunt is a common noun. All right? तो ये फर्क है common and proper noun में. आगे बढ़ते हैं, हम क्विकली ये सारे नाउन की टाइप्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स को डिस्कस करेंगे. और आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करके बताना है कि कौन सा नाउन किस तरह है और क्या डिफरेंस है चीजों में. कॉन्क्रीट नाउन नंबर 3. नाउ द वर्ड कॉन्क्रीट, इट मीन्स दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग, a noun, name of a thing, person, or anything that we can actually touch. We can actually feel that. So, concrete noun is something that can be perceived through the 5 senses. So, 5 senses से जो भी हम चीज perceive करते हैं, all the nouns, all the things, they are concrete nouns. For example, camera. Can you touch the camera? Yes, you can touch it, you can operate it. Can of water, table. तो ये जितनी भी चीजें हैं जो आपको नजर भी आती हैं, आप फील भी कर सकते हैं, आप उसे टच भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं they are concrete noun. Now I need one student to give me an example of concrete noun. जी, Kamran Public School. Yes. Can you give me one example of concrete noun? Yes. The Renaissance School. Raised hand. Yes. LED. Yes, of course. LED. Glass, book. All of these things are concrete nouns. Very good. But abstract nouns, they are different. Abstract nouns are the nouns that we cannot actually touch. We can just... Yes. All right. जी ठीक. Abstract nouns, concrete nouns के बिल्कुल opposite है. हमें पता है abstract nouns वो चीजें, ideas, concepts जिनको हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट हम उन्हें टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, बस उसे फील कर सकते हैं. All of these nouns are abstract nouns. For example, kindness. और स्टूडेंट्स आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर को बताएंगे, 2 abstract nouns each student will tell their instructor that what are abstract nouns, like kindness, love, hate, idea. All these are in your head, they are in your heart, you feel them. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो जज्बात हैं, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स के नाम हैं, गुस्सा है, खुशी है, all of these are nouns but they are abstract nouns. कलेक्टिव नाउन्स की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन से मुराद हमारी है कि चीजें जब एक ग्रुप में हो तो हम उन्हें एक नाम देते हैं. बंच ऑफ कीज, दिस इज अ ग्रुप ऑफ लायन, फैमिली, क्लास.
So all of these are collective nouns. Army is a collective noun. It contains so many different army personnel, so many different individuals, but we have one word for that. जब हमारे पास ग्रुप्स के लिए, कलेक्शंस के लिए जब एक नाम होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. ऑलराइट? जैसे क्लास. When I'm saying class, I'm referring to all the students present in the class. All right. Now, another type of noun is compound noun. Compound का क्या मतलब है? जब चीजें एक से ज्यादा हो, they are more than one, they are called compound nouns. All right. Now, when we have more than one word, when we have more than one nouns, they are combined together to form one word. After the snowstorm, the city's snow clearing equipment worked tirelessly to clear the streets, including snow plows, salt spreaders and snow removal trucks. यहां पे देखें, स्नो स्टॉर्म, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, दो नाउन्स हैं, स्नो स्टॉर्म, मिलके क्या बना? स्नो स्टॉर्म, स्नो क्लियरिंग, राइट? तो इस तरह के जो नाउन्स हैं जो कि दो वर्ड से मिलते हैं बट दे आर एक्टिंग एज वन, वी कॉल देम कंपाउंड नाउन्स. So, for example, you can see here toothpaste, ice cream, दो words हैं but they are acting as one noun. Now we have countable nouns. What do we mean by countable nouns? It means that we can count them. वो चीजें जो हम गिन सकते हैं with numbers. This is what we call countable nouns, and I'm sure that in the previous classes you must have learned about these different types of nouns and especially countable nouns. Now, a countable noun is a noun that you can count. For example, students, books, pens. The company hired 10 employees to work on the project. Kitne employees? 10. Can we count them? Yes. 1 employee, 2 employees, 3, 4, 10. All right. Now, I would like to ask France school system, please इन्हें unmute करें. Yes, give me 2 examples of countable nouns. Yes, please unmute yourself. जी. France school. All right, chair. Chair is a good answer. We can count it. There can be one chair, 5 chairs, right? So इस तरह की चीजें जो हम गिन सकते हैं, they are countable nouns. But on the other hand, things that we cannot count. Can you count salt? Students, can you count sand? Please raise your hands. अगर आपको लगता है कि आप रेत को, सैंड को गिन सकते हैं तो अपना हाथ उठाएं. Raise your hand. Very good. So I am getting the idea that you know that sand or water, rice, salt, they are not countable because they are very tiny and they are almost impossible to count. So all of these nouns that we cannot count are called uncountable nouns. Now students, we have quantifiers. Quantifiers क्या हैं? अगर मैं कहूं कि 5 brave men, तो 5 क्या है? 5 एक नंबर है, हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, कितने चीजों की बात कर रहे हैं. तो 5, some, few, many, everyone, all of these are 1, 2, these are all the quantifiers जो कि हम अपने nouns के साथ यूज करते हैं उनकी क्वांटिटी को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पे है the 5 men, 5 आदमी. तो 5 क्या है इसमें? Is a quantifier.
some students passed the exam. कुछ स्टूडेंट्स ने, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया. तो हमें पता है स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है और बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. सम क्या है? इट इज टेलिंग अस द क्वांटिटी. दैट्स व्हाई वी यूज क्वांटिफायर्स, ताकि हम क्वांटिटी बयान कर सकें. देयर इज मच डिबेट अबाउट द न्यू लॉ. मच. अब डिबेट के लिए हमने क्या क्वांटिफायर यूज किया? मच. क्या हम डिबेट को गिन सकते हैं? नो. बट वी आर यूजिंग क्वांटिफायर्स. तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, उनके साथ हम नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं. 5, 4, 3, 10. ठीक है. और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते, जो अनकाउंटेबल हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? वी यूज सम, मैनी, मोर, मच, etc. So quantifiers can be used for countable nouns and also they can be used for uncountable nouns. Now students, आप लोगों ने क्या करना है? You have the book before you. You will choose a passage और उसके अंदर आप nouns को सर्च करेंगे और आप कैटेगराइज करेंगे with your instructor. You will respond to the instructor. अपने टीचर के साथ कोलैबोरेट करें और nouns को सर्च करके बताएं कि ये नाउन है, ये क्वांटिफायर है, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एंड एटसेट्रा. You will get the worksheet and other resources, a question bank, you will get a skill sheet as well. Now let's begin the next part. All right. Now, since we are only talking about nouns today in this SLO, another part of the SLO is कि हमने differentiate करना है singular noun and plural nouns के दरमियान में. तो अभी तक हमने यहाँ तक जो पढ़ा है, क्या आप लोगों को समझ आ चुकी है? Please raise your hands. So this SLO, yes, very good. This SLO was kind of like a revision because a very basic thing we have been learning since the previous classes. When we are talking about singular nouns over here, we know we are referring to one thing. For example, a cat, a banana. तो ये क्या है? Singular है. We are talking about one thing only. When we are talking about plural nouns, we have more than one noun. For example, we add additional s or es. जब हमने plural को दिखाना है, plural use करना है किसी noun का, तो हम क्या करेंगे? s की addition करेंगे और es की, according to the different rules. So students, there are so many rules. We just have 2 minutes. So I would like to go through one or two rules. You will get the PPT, you will understand it. So rule number 1 is that you simply just add s with the noun. You will simply just add s and you will get the plural noun. आप s की addition करेंगे. For rule number 2, yes, sometimes when you are ending with sh or ch, we will add es. तो वो nouns जो sh और ch पे खत्म हो रहे हैं, हमें उनके साथ सिर्फ s ऐड नहीं करना बल्कि es भी ऐड करना है. Then we need to add es with o. जो nouns o पर end हो रहे हैं, we will add es. So there are all these rules. Rule number 4. Rule number 4 we will omit y and add ies. Simple. Rule number 5. जहां पे हमारे पास noun f पे end होगा, we will add ves. Like knife will become knives, not knives, बल्कि f खत्म हो जाएगा और ves को हम add करेंगे. Then we have rule number 6 for the that is the same. Rule number 7 again. Sometimes we will not remove f, but बल्कि हम जो है s को add कर देंगे, f को remove नहीं करेंगे. So in the English language, dear learners, you need to understand, you have to break some rules as well. A rule is made, then it is also broken. Here are some more rules. These are kind of irregular nouns. Yes. So we will continue our lecture
by tomorrow from rule number 9, और हम पहले पढ़े हुए जो अभी हमने go through किए उन rules को दोबारा cover करेंगे. You are going to have your Urdu class right now. I hope students that you will work on your resources जो आपके साथ share की गई हैं, worksheet, skill sheet up to this lecture, and inshallah by tomorrow we will begin and we will start from this very rule. I hope everything is clear.